जो किताब विमोचन हुआ है उस विषय में आप क्या कहते हैं? मुझे लगता है सब कोई राजनीति और सबसे हटकर और मीडिया, सोशल मीडिया, उन सबसे हटकर एक जो ज़िंदगी है उसमें रोज़मर्रा की चीज़ें जो हमें परेशान करती हैं और वो उस दिक्कतों से निजात पाकर कहीं ना कहीं एक सुकून और छाँव की ज़रूरत होती है सबको। तो इस तरह की जितने भी मेरे पास रिक्वेस्ट आती हैं कि मैं इस पर बात करूँ या इस तरह की किताबों पर चर्चा करूँ, तो मैं उस अवसर को कभी नहीं छोड़ती। मुझे लगता है कितना ज़रूरी है अपने पूरे ज़िंदगी, अपने पूरे जो भी हम लोग काम करते हैं उससे नफ़रत को हटाना, अपने लिए भी एक जेंटलनेस से, प्यार से अपने को भी देखना और दुनिया को भी देखना। और ज़रूरी है कि हम लोग अगर थोड़े चिंता कम होगी, थोड़ी सुख ज़्यादा होगा तो हम लोग जाहिर सी बात है बेहतर महसूस करेंगे अपने बारे में। तो इस वजह से मैं यहाँ पे हूँ और मीरा जी की इस किताब को मैं सपोर्ट करती हूँ। दुनिया शांति की तरफ जा रही है, जिस तरह से कहते हैं पश्चिमी दुनिया में भी अशांति से शांति की तरफ आ रही है, तो भारत पूरे भारतवर्ष से दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाते हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इस तरह से भारत तो एक तरह से विश्वगुरु रहा है, क्योंकि हमारी शक्ति सिर्फ मिलिट्री या आर्थिक नहीं रही है। ये जो ज्ञान है और ज्ञान के ज़रिए जो सुख का हम लोग ने हमेशा काम किया है तो वो है, क्योंकि इस देश में माँ सरस्वती की पूजा करने वाले लोग हैं, जो ज्ञान को ढूंढने वाले लोग हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि अपने भीतर जाकर हम लोग समझें कि कहीं ना कहीं खुशी का जो स्रोत है सुख का, वो अंदर ही है। और ये हमारे गुरुओं ने कितने साल पहले हमें बताया, लेकिन कहीं ना कहीं हम हट गए। तो पढ़ाई लिखाई का पता नहीं क्या असर हुआ हमारे पर कि हम जो बहुत ज़रूरी जो है शिक्षा से बढ़कर जो ज्ञान है उससे दूर चले गए। और जैसे आपको उस ज्ञान का अंदाज़ा होगा, आपको ये एहसास होगा कि एक पूरी वननेस है, एकता है और इस रूहानी धागे से पूरी दुनिया बंधी हुई है। अंतिम में पूरे यंग जनरेशन के लिए अंतिम शब्द पूरे यंग जनरेशन के लिए? देखिए, यंग और ओल्ड की से बात नहीं है, हर एक इंसान जहाँ कहीं भी है किसी ना किसी चीज़ से नहीं, यंग कहीं भटक रहा है। आपके युग में सिर्फ एजुकेशन है, पैसा है, या फिर पुराने सभ्यता संस्कृति में नहीं जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं, बहुत सारे बूढ़े और बड़े भी हैं, वो भी भटके हुए हैं। भटके हुए बहुत से लोग हैं और कोई बहुत से यंग लोग हैं जो बहुत ही समझे हुए हैं। मैं तो अपने भतीजों से बात करती हूँ या भतीजी से, तो वो मुझे इतना ज्ञान देती है कि मुझे समझाते हैं। तो मैं नहीं मानती कि इससे एज का कुछ ताल्लुक है, कि ये जनरेशन की बात है। ये एक बहुत ही हर एक के मन, उसकी मानसिक व्यथा और उसके जो अवस्था है उससे इसका ताल्लुक है। और मुझे लगता है सबके लिए ज़रूरी है कि हम लोग अपने भीतर देखें और अपने भीतर खुशी As the president of Sanskriti Yuva Sanstha and the organizer of the Jaipur Marathon and Bharat Gaurav Awards, we've all heard of them. Mishra ji has been a great friend of Meera ji's and of course mine too. Meera, you're not the only one. And he has supported her. Please welcome on the stage Pandit Mishra ji. May I now introduce the sassy, cool author, my dear friend, with whom I developed the most beautiful friendship most organically, and somebody who epitomizes joie de vivre. Our very own Meera. Meera, please come on stage. Many of you know that she's a Delhi girl. She spent a lot of time in Mumbai. She was from CJM, and she was also the president of JMC College. And a great humanitarian, a philanthropist, social activist, a modern businesswoman, and a mental wellness advocate who divides her time between New York City, London, Mumbai, Dubai, and Hong Kong. As founder and CEO of Giving Back Foundation, she has dedicated herself to making a difference through her commitment to enhance the lives of others and create a more just world. I'm going to join in with them and ask them a few questions. You know, away from the political din and the hustle bustle of it all, when Meera asked me to moderate the session,
I was only too delighted. We keep asking this question, you know, hi, how are you doing? आप कैसे हैं? And do we ever ask ourselves, how am I? मैं कैसा हूँ? मैं कैसे हूँ? हमारे अंदर क्या कुछ हो रहा है? हम क्या महसूस कर रहे हैं? एक तो पद हैं, ओहदे हैं, पूरी दुनियादारी है, एक प्यास है, एक भूख है, एक जुस्तजू है। उस सबके बीच में मैं और मेरे अंदर का जो रूहानियत है वो कहाँ है? How is my inner soul doing? Is it being nourished? Is there angst and grief somewhere within me? Am I in denial of something very real? How can I get more joy from this life? How can this moment be liberating, fulfilling, and a source of happiness, not just for me, but for the environments, others around me. And you know, we are so scared to talk about mental wellness, emotional well-being. There's a taboo. You can't. But you know something? All the great, anything great, profound, artistic, scientific, it is born from an inner spirit. And if that is not nourished and looked after, there's precious little you can do. Which is why I'm so impressed by my wonderful friend Meera in actually giving simple ideas on happiness. And which is a great reason which brings all of us together. But before I ask the anxiety, I would like to go to Pandit Rishaji, who has just been a great supporter of so many fantastic initiatives. सुरेश जी, आप बताइए हमको, इतने सालों से आप इतना शानदार काम कर रहे हैं, वो क्या है आपके अंदर, वो क्या चीज़ है जो प्रोत्साहित करती है, और आपके अंदर की खुशी कहाँ से आती है? देखिए, मीरा जी मेरे मित्र हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। मेरी इनसे मुलाकात जब मेरी पहली बार हुई थी 2017 में, हम लोग यूनाइटेड नेशन के अंदर पहली बार भारत को अवार्ड करने वाले थे। कमलेश मेहता जी जो साउथ एशियन टाइम्स के जो चीफ हैं वहाँ पे, उन्होंने छोटा सा गेट टुगेदर रखा जिससे हम लोग बैठे हुए हैं। मीरा जी से पूछो, उनकी अंदर से एविडेंस जो उनकी हो रही थी जी, इनकी ईश्वर की बड़ी कृपा है इनके ऊपर, मैं मानता हूँ इस बात को कि जो ये चाहती हैं उनको सब कुछ मिलता है, और जो लिखती है वो देखने आपको मिलने वाला है सामने को। ये ऐसी पर्सनैलिटी है पूरे अमेरिका में अपने आप में अलग रिकॉग्निशन लेके चल रही है। आज हमारे बीच में इंद्रजीत शर्मा जी भी आए हैं इंग्लैंड से, ये भी हिंदी साहित्य परिषद के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जब इंद्रजीत जी इनसे मिलते हैं तो एक तरह से ये लगता है कि एक शानदार तरीके से इनका कंडीशन है और एक वंडरफुल लेडी। मीरा जी के बारे में मैं बहुत सारी बातें करना चाहूँगा, लेकिन अभी उनकी चर्चा चलेगी लंबी अपनी। जब मीरा जी ने किसी काम को टास्क को हाथ में लिया उसको पूरा कर दिया। इन्होंने ये फाउंडेशन बनाया, छोटी सी सोच थी, आज पूरे वर्ल्ड में इन्होंने अपना नेटवर्क, मैं लंदन के एक प्रोग्राम में गया पिछली बार 2019 में कर रहे थे। जावेद जाफरी भी आए हुए थे और सावन आजमी भी आई हुई थी उसमें। उन्होंने शानदार इनके बारे में बताया कि कैसे उन्होंने छोटे से परिवार से स्टार्ट होकर के अब पूरे वर्ल्ड में अपनी अलग पहचान बनाई है। पूरे वर्ल्ड में इनके मित्र हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि पूरे विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, प्रधानमंत्री जी, लेकिन हमारी मीरा जी कंट्रोल नहीं है। ये जो गुजराती है वो भी मीरा जी है। तो मीरा जी से मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं कोई सोशल लाइफ में हूँ, मैंने चुनाव भी लड़ा विधानसभा का, जयपुर से चुनाव हार गया था, कांग्रेस पार्टी से लड़ा था। और जब से मीरा जी से जुड़ा हूँ, एक परिवार की तरह मुझे अपना मानती हैं और अपने साथ में जोड़ के रखती हैं, इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप यहाँ इंडिया में आई, आपने इस किताब के लिए तय किया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में इसका प्रवचन करेंगे और चर्चा करेंगे। और एक अच्छी बात इन्होंने कहा कि मुझे भीड़ नहीं बुलानी। उन्होंने सोचा सेलेक्टेड 10-12 लोग आपके, 10-15 लोग मेरे मित्र, हम 50 लोग बैठ के बात करेंगे और खुल के बात करेंगे। तो भीड़ में बात नहीं हो पाती है और भीड़ समझ में नहीं पाती कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या, हम चाहते क्या है। तो आज मीरा जी को हम लोग सुनेंगे। और साजा जी बोलती है तो पूरा देश देखता था इनको, हमने AP न्यूज में भी देखा है इनको। रोज इनकी TV पे जो चर्चा बहस करती हैं, ये दहाड़ती है, मैं बोलता हूँ बहस नहीं करती, दहाड़ती है, तो सामने ना भाग जाता है करके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।
अपनी दृढ़ता से बात रखते हैं। सुरेश भाई इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें खुद करते हैं और हमेशा औरों के लिए होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए। ये सबसे बड़ी एक खूबी है। और आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ में जो सबसे टिप्स है मेरा, आपने इन्हीं सब वैल्यूज़ का जिक्र भी किया है। आई वुड नाउ लाइक टू आस्क मीरा. Mira, it's a great book. I mean, it's fabulous. I mean, people should just carry it everywhere. You know, you tell me what prompted you to write this, and also tell us about a little bit about the success of the Instagram series. So, I have this. Well, basically, 3 Tips started on the Meera Gandhi show, which was being filmed by B4U TV network, North America. And in the first episode, when we were filming, we had to do a loose script, and the producer sort of stopped me and said, Meera, why don't you just give 3 tips on something? And it was not scripted, so I said, well, let me give 3 tips on love. I mean, I had recently gotten divorced, so I said, oh, let me give 3 tips on love. So they all started laughing, and I gave 3 tips on love. And I was speaking, and I was on the waterfront at Battery Park. And I was amazed that so many people, they just stopped and they were just literally, they gathered and they were listening to the tips. Because when we were filming, they were not really so interested. But when I started giving the tips, a crowd sort of gathered and they were listening, and we did a couple of retakes. And after that, we did 3 tips on every show. And B4U's feedback was, the readers are really resonating with 3 tips. They are writing in. And I had a big host of emails on this. From this, I just developed the Instagram series, which we had 800 followers, and it grew to 2.4 million. So obviously, it was a message. Thank you. It was a message that resonated with people. The reason being, all of us are busy. All of you here, my esteemed guests, we are very senior journalists in the room. Shazia goes to 10 things a night. I mean, lucky to even get her on WhatsApp at night, but she's very kind to call back and always on it. So I thought, why not condense the knowledge into 3 tips, so that if you're frustrated or something, you can open it. Right, if I'm stressed, I open it and look at 3 tips. Why 3 tips? Why not 4 or 5? What's this power of 3, the magic number? I chose 3 because I'm a devout Christian, and I think I have a spiritual tendency to me, and I think 3 is the sign of the divine. And so 3 tips, I feel like it's divine knowledge, that it's there, it's given to us. I'm just the conduit that it's coming through. I've made it sort of hip and easy to access, and it's sort of a pop way of delivering a message, and that's why it's 3 tips. But there's power of 3. हमारे हिंदुइज्म में भी देखेंगे और अद्वैत में भी देखेंगे, तो 3 का तो बहुत ही खास। सही कहा मेरा जी ने बात से कि ये डिवाइन नंबर है 3 नंबर। और हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश की बात भी करते हैं हम लोग। तो इन्होंने जो 3 बातें रखी हैं कि जॉय, पीस, जॉय एंड सक्सेस। जब शांति होगी तभी हमको अच्छा महसूस होगा और तभी हम सक्सेस तक आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 3 टिप्स हमारे जीवन के अंदर बहुत अच्छा है कि जुड़ाव भी बनाएंगे, हमको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। क्योंकि हम लोग भूलते जा रहे हैं कि हमारी पुरानी चीज़ें हम लोग भूलते जा रहे हैं। हम लोग भागे जा रहे हैं गति दौड़ के अंदर, कोई नेता के लिए भाग रहा है, कोई पैसा कमाने के लिए भाग रहा है, लेकिन जब तक हमको शांति नहीं मिलेगी, इसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई इसका अंत नहीं है। तो जाना हम सबको खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। तो हमको सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि हमको पीस से रह सकें, इंजॉय करते हुए रह सकें और सक्सेस की तब आगे बढ़े। Meera, tell me more about the inspiration behind this and about your own personal journey. What made you go from the path of, there is discord in our lives, there is dissonance in so many levels, friction. So to kind of move out of it. It's a very, very big first step. So someone can scream at you, and you can just not react, and then it's not going to affect you. It's like it just washes off you. When you said 3 tips like take a bath, I mean it does help. If you have a very stressful day and you're bringing all this stress into your home, and the first step, you step in and you take like a really quick bath. It doesn't matter whether it's a shower, a luxury shower, a bucket bath, a dip, I don't really care. But that makes a big difference. And in fact,
Sadhguru, all the gurus talk about it. It's very important to do that. It's the first physical cleansing. Then the second tip I offer there is then you mentally cleanse. So you chant a mantra or you close your mind and you start breathing. And you slow your thoughts. Slowly you blank your thoughts out. And then you're just breathing. And suddenly that moment is really, it's in the past. It just doesn't seem that toxic anymore. And then the third is you have to really process, like, why did that bother me? And if it bothered me so much, and I have control of my life, well, maybe I need to change my situation. I have to say something or I have to do something, because I'm not going to continue living like that. And we all have control to some extent over every situation. It's just the way the planet is made. Sure. That's really beautiful. So, I mean, I've learned this also, and I'd like to share. Being gentle with oneself, being kind, being forgiving towards oneself goes a long way. Don't you think it's important to have that awareness about what we are going through and to be nicer to ourselves? It's extremely important. So many times in the past I used to do this, and sometimes I still do. Oh my God, that's so stupid of me. No. It happened. There's a reason for it. It's okay. It's okay. And I think that when we are kind to ourselves and we're in touch with ourselves, we're able to be kinder to other people. It's a complete knock-on effect. And I think that the world has become far too competitive, and we don't need to be that competitive, and we're seeing a whole shift. The Grammys last year, I told my daughter this. Yes, ma'am.